Very good morning, dear students. Students, yesterday we learned how to change the simple statements of present tense into negative sentences. Okay, we used do not and does not. Okay, today we will learn how to convert the simple sentences into interrogative sentences. Interrogative sentences, or you can say question sentences. Okay, yes, first of all, Vidhi studies in GGP school. This simple statement is given. Vidhi studies in GGP school. Now we have to convert it into interrogative. Does Vidhi study in GGP school? Vidhi is a singular subject. Okay, singular के साथ हम क्या यूज करते हैं? Does. तो क्वेश्चन की फॉर्म में हमें बनाना है तो हम does पहले यूज करेंगे और आगे सेम सेंटेंस एंड there should be question mark at the end. Does Vidhi study in GGP school? You can see question mark at the end. And in the same way, we can convert into interrogative this sentence into interrogative with the help of WH family. WH family means where, why, what, जो WH से start होते हैं and how भी इसी family का ही member. Okay. Like where does विधि study? विधि कहाँ पढ़ती है? दोनों तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्या विधि जीजीपी स्कूल में पढ़ती है? विधि कहाँ पढ़ती है? Okay. Second example is given. Anand and Shilpi like vegetable soup. Again, simple statement is there. Anand and Shilpi like vegetable soup. Now, Anand and Shilpi, we are talking about plural nouns. Now our subject is plural, Anand and Shilpi. So you can see there is no S or ES with the first form of verb. Only like is there, not likes. Okay, so we are using here do to convert it into interrogative. Do Anand and Shilpi like vegetables? Okay, क्योंकि आनंद और शिल्पी प्लूरल हैं तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? मोर देन वन के लिए हम क्या यूज करते हैं? डू. एंड आगे सेम सेंटेंस एंड देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. अगेन convert this simple statement into interrogative with WH family. What do Anand and Shilpi like? आनंद और शिल्पी को क्या पसंद है? आप ऐसे भी तो पूछ सकते हो ना, क्या आनंद और शिल्पी को वेजिटेबल सूप पसंद है? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. और अगर आप WH फैमिली से बनाओगे, व्हाट डू आनंद एंड शिल्पी लाइक? आनंद और शिल्पी को क्या पसंद है? ओके, सिंपल स्टेटमेंट को ही हमने क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज करना है. आप WH फैमिली से करो या हेल्पिंग वर्ब से करो, देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. ओके, now convert the following statements into questions. First example again given, they live near the school. Here they, again we are talking about plural. Subject they means okay. Do आगे same sentence. Do they live near the school? And there should be a question mark at the end. Second example again given, it rains heavily in Assam. It, singular, subject. So, does it rain? Like आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए क्या किया था? आप डू यूज कर रहे हो या डज यूज कर रहे हो, आपने वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस जो दिया हुआ था आपने उसे रिमूव कर दिया था. इंटेरोगेटिव में भी सेम, क्योंकि आपने डज यूज कर लिया. ओके, तो रेन्स नहीं, ये रेन हो जाएगा. डज इट रेन हैवीली इन असम? आपको सेम वही करना है. नेगेटिव बनाते हुए आपने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट यूज किया था एंड टू फॉर्म इंटेरोगेटिव आपको सबसे पहले ये यूज करना है. डू या डज डिपेंड अपॉन द subject. Your subject is singular or plural. If the subject is singular, then you have to use does. If the subject is plural, then you have to add use do. Okay.
Now first one, Anand flies a kite. Here Anand is a singular subject. Okay, but you have to use does. Does Anand fly a kite? Does Anand fly a kite? Fly बोल रही हूँ बेटा मैं, क्योंकि आनंद सिंगुलर था, उसके साथ IES लगा हुआ है सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। बट जब भी हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो एस या ES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है उसे रिमूव कर देंगे। ओके, डज आनंद फ्लाई अ काइट एंड देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ओके, नेक्स्ट सेकंड वन, शिखर हिट्स द बॉल वेरी हार्ड। Shikhar hits the ball very hard. Again, Shikhar is singular. It is the name of a person. Shikhar hits the ball very hard. Now again we have to use does. Does Shikhar hit the ball very hard? Again I am removing S. Okay? आप S यूज नहीं करोगे इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर आपने S या ES ऐड किया हुआ है तो आप उसे रिमूव कर दोगे। Does Shikhar hit the ball very hard? There should be a question mark at the end. Now third one, the sun shines brightly. The sun shines brightly. Again, the subject is singular. The sun is singular. Does the sun shine brightly? Are you observing? Does the sun shine brightly? Again, I am removing S. Okay. And there should be a question mark at the end. Now, my parents live in Kanpur. My parents. Now, parents are plural. मम्मा और पापा दोनों के लिए यूज करते हैं ये वर्ड पेरेंट्स। ओके, तो पेरेंट्स है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लूरल है, so we have to use do. Do my parents live in Kanpur? Do my parents live in Kanpur? There should be a question mark at the end. Okay. Now fifth one, parents love their children. Again, parents plural. Do parents love their children? Same sentence. Do parents love their children? आपने do या does लगाना है, उसके बाद आपका सेंटेंस सेम रहेगा। सिर्फ आपको क्या देखना है कि आपको अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने S या ES लगाया हो तो वो रिमूव करना है, अदरवाइज द सेंटेंस शुड रिमेन सेम। ओके, इट विल रिमेन सेम एंड देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। वेरी सिंपल पार्ट। ओके, सिक्स्थ वन, Assam produces tea. Assam, again, we are talking about a single state, subject is singular. Then, does Assam produce tea? Okay, does Assam produce tea? There should be a question mark again at the end. The boys play cricket on Sundays. Boys. Now subject is plural. So we have to use here do. Do the boys play cricket on Sundays? Do the boys play cricket on Sundays? Next one, children love cartoon movies. Again, children plural. Child is singular and plural of child is children. Do children love cartoon movies? क्या बच्चों को कार्टून मूवीज पसंद है? And question mark at the end. I am repeating this part. First one, does Anand fly a kite? Second one, does Shikhar hit the ball very hard? Third one, does the sun shine brightly? Fourth one, do my parents live in Kanpur? Fifth one, do parents
love their children. Sixth one, does Assam produce tea? Seventh, do the boys play cricket on Sundays? And next, last one, do children love cartoon movies? Always keep in mind that there should be a question mark at the end. Okay. Now next part, write questions to which the following may be suitable answers. Begin your questions with the question words. Means WH family से what, why, which, when, where, who, how. आपको ये words use करने and these words are given, these question words are given in the bracket. Okay. First example is given. This dictionary costs rupees 480. And question word is given what? What does this dictionary cost? Okay. Second, first sentence of practice exercise. This flight takes off at 7:50 a.m. ये flight कितने बजे उड़ेगी? 7:50 a.m. Okay. And question word is given when. Means कब. When does flight singular है तो आप does use करोगे. When does this flight take off? Flight is singular. That's why आपने does use किया, लेकिन आपको s या es जो verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिया हुआ है आपने उसे रिमूव करना है. Listen again. When does this flight take off? Second sentence. They serve snacks during the flight. वो flight में snacks serve करते हैं. And question word is given blank, what in the bracket. Okay. They, plural है आपका subject, तो आप क्या use करोगे? Do. What do they serve during the flight? Okay. They आपका plural है subject, तो आप क्या use करोगे इसके साथ? Do. What do they serve during the flight? वो flight के टाइम क्या serve करते हैं? Third one, Shalini sits in the front because her eyes are weak. Shalini front पे आगे बैठती है क्योंकि उसकी eyes weak हैं. And question word is given why. Why means क्यों. Why does, क्योंकि शालिनी singular है, single person. Why does Shalini sit in the front? Why does Shalini sit in the front? आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने s रिमूव कर दिया क्योंकि शालिनी सिंगुलर था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s यूज हुआ था. ओके. Why does Shalini sit in the front? And there should be a question mark at the end. Fourth one, these children go to school by school bus. ये बच्चे स्कूल बस से जाते हैं. And question word is given how. How means कैसे. And here subject is plural. These children. बहुत सारे बच्चों के बारे में बात हो रही है. How do these children go to school? How do these children go to school? And question mark at the end. Now fifth one. Vibhu lives at Anand Vihar. Vibhu lives. Vibhu singular subject है. That's why live के साथ s लगा हुआ है. And in the bracket question word where is given. Vibhu lives at Anand Vihar. Vibhu Anand Vihar में रहता है. And question आपने where से form करना है. Where means कहाँ. Where does Vibhu live? Where does क्यों लगाया आपने? Because the subject is singular. Vibhu singular है. Where does Vibhu
live. Sixth one, Miss Ghosh takes care of the sound system. Miss Ghosh जो है वो साउंड सिस्टम की देखरेख करती हैं, वही संभालती हैं सब कुछ. And the question word who is given. Who means कौन. Okay. Miss Ghosh is singular. तो आप क्या यूज करेंगे? Who takes care of the sound system? Who के साथ आप does नहीं लगाओगे. Who takes care of sound system? 7. 10 students will be appearing for the maths Olympiad. Appearing मतलब उन्होंने एग्जाम दिया. कितने स्टूडेंट्स ने मैथ ओलंपियाड दिया? How many? कितने? तो आपको how many से स्टार्ट करना है. How many students will be appearing for the, will be, appear होंगे, future. We are talking about future. Okay. How many students will be appearing for the maths Olympiad? कितने students maths Olympiad के लिए appear होंगे? Okay. Yes, dear students, that's all about this chapter. Simple present tense. We have done simple sentences. Then we learned how to convert simple sentences into negative. And today we learned how to convert simple sentences into interrogative sentences. Okay. Yes, dear students, now we are going to unmute all of you. Excuse me, Akash sir.